हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीड माइंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट्सएप का नया फीचर रूम यानी मैसेंजर रूम कैसे यूज़ करना है। और आपको बता दें कि आपको अगर इस फीचर के बारे में पता नहीं है तो ये रिसेंटली एडेड है और इसमें कुछ अभी मिस्टेक्स है जो व्हाट्सएप को शायद से पता नहीं होगी। वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप कोई भी ग्रुप पे जाइए, मैं अपने लैपटॉप पे हूँ, आप चाहे तो फ़ोन पे करिए, स्टेप्स आर सेम। Here you have to do nothing, बस आपको रूम पे क्लिक करना है एज अटैच ऑप्शन जैसे मैंने अभी किया एंड अ स्क्रीन विल पॉप अप इन लैपटॉप, न्यू टैब विल पॉप अप एंड आपका पूरा स्क्रीन चेंज हो गया। व्हाट्सएप की जगह मैसेंजर रूम में आ जाएगा आपके फ़ोन में। यहाँ पे आपको बस क्रिएट अ रूम एज जो भी अकाउंट है आपका उससे, एंड देन जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी इन योर मीटिंग। इट्स अ रियली नाइस फीचर। ये व्हाट्सएप ने इसलिए डाला है क्योंकि प्रीवियसली इसकी एम जो थी एमआरपी रेटिंग्स डाउन हो रही थी क्योंकि इसके कॉल में सिर्फ और सिर्फ 8 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे और बहुत सारे फीचर्स थे जो व्हाट्सएप प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। इसलिए इन्होंने ये दिया है, इसमें आप 50 पीपल एक साथ एक ही रूम में एक ही बार में चैट कर सकते हैं एज वीडियो चैट। आप यहाँ पे आपकी लिंक होते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं और आपको बताता भी है आपकी मीटिंग लिंक ऑलरेडी कॉपीड है। इट्स कॉपीड एंड देन इट विल शो अगेन कॉपी। यहाँ पे आपकी शेयर योर स्क्रीन है, आप चाहे तो इसको क्लिक करके फिर शेयर पे क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेबल विंडो लाइक दिस एंड शेयर। इट्स सुपर इजी, पर मुझे अभी नहीं करना, सो आई कैंसिल इट अप। सो यू कैन सी योर पार्टिसिपेंट्स एंड यू कैन लॉक योर रूम। आप चाहते हैं बस इतने ही लोग ज्वाइन होंगे, मुझे और कोई नहीं चाहिए मीटिंग में। नो वन एल्स buzzing near me and disturbing me up. Just on this option, here you again get the copy option. Go to settings. Here you can end your meeting. In room it's written and share screen for everyone. It's a default option in this messenger. And here the messengers and leave room and all the main settings. यहाँ पे आप live broadcast कर सकते हैं. Like okay, broadcast live. You can add a title, optional anything, or you can just click it up. And you can just click on the three dots device and you can enter your full screen, and then again exit. And you can do your device settings whatever you want. Like, it's super easy to use, it's a fun app. But here, when I started using it first, there was a chat option which only came to my first call, and then it didn't came. That's the WhatsApp's mistake that it's not paying attention on. If anyone from WhatsApp is seeing this video, please fix this stuff which's coming. If you are in a video chat room, then how will you able be to chat if you don't get the option of chatting? So that's all for this video. Thanks for watching. Like this video and share it with your friends. And don't forget to subscribe my channel. Bye.